Like State Bank of Pakistan and Securities and Exchange Commission, Federal Board of Revenue also is a key element of our financial environment. We know that to operate an economy and to run a government, funds or money is required. And the major source of financing or money for the government is actually taxes. The institution which is involved in uh, collecting taxes, making rules and regulations for taxes, and different kind of duties which are actually the main source of revenue for a government is the Board of Revenue. This Federal Board of Revenue has again several functions which it performs, and these functions play certainly a vital role in the growth or sustainability of not only business organizations and an economy, but the whole country as a whole. Uh, जब हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देखते हैं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, शायद मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो उसका रोल है फिस्कल पॉलिसी बनाने में. फिस्कल का मतलब है कि समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस और मनी और फंड्स. So a policy which is related to the generation of funds or finances actually is the fiscal policy. जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि हमारे मुल्क में या हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डिफिसिट है, इसका मतलब है कि हमारे रेवेन्यूज़ कम हैं और हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. जब हम कहते हैं कि हम फिस्कल सरप्लस है हमारे पास किसी जगह पर, तो इसका मतलब है कि हमारा मुल्क या हमारी इकोनॉमी ज़्यादा पैसा कमा रही है और हमारे खर्चे जो हैं वो कम हैं, या हमें जो पैसा पे करना है वो कम है. So, a country which is having a financial surplus is likely to be a developed country and a growing country. And FPR plays its role in actually making a country or an economy financially viable by making a good financial fiscal policy, which means that collecting taxes from all those people who should pay taxes. इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं. एक तो ये कि कितना टैक्स चार्ज किया जाए और किस से टैक्स चार्ज किया जाए. एक जनरल रूल टैक्स के बारे में जो है वो कहा जाता है कि हर वो आदमी जो इस इकोनॉमी, इस सोसाइटी, इस कंट्री का हिस्सा है और वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहा है और उसकी आमदनी, उसकी इनकम एक ख़ास हद से ज़्यादा है, उसको टैक्स पे करना चाहिए. In countries like Pakistan, where it is found that many people who should pay tax do not pay tax. And as a result, the role of FPR becomes more significant. And then there are ways जिनको हम मुख्तलिफ अल्फाज में बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन और इस तरह की टर्म्स के जिनके ज़रिए से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स को बचाते हैं. वहाँ पर FPR अपना रोल प्ले करता है कि टैक्स को किस तरीके से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए. और हम एक टर्म यूज़ करते हैं टैक्स नेट, यानी वो तमाम लोग कि जो टैक्स जिनको देना चाहिए उनको उस टैक्स नेट के अंदर शामिल होना चाहिए. सो FPR makes this fiscal policy which has got these three major components. The first one, which I have just mentioned, that is making policies regarding the taxation, that is the tax to be levied and collected from people and organizations. Then the fiscal policy is also related to government spendings. That is कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किस किस जगह के ऊपर पैसा खर्च करेगी और कितना पैसा खर्च करेगी. And obviously, this is something which is related to the capacity of the government. And the third thing, which is part of our fiscal policy, is transfer payments. That is, the payments which are not made for any profit or for against which we do not get any product or services.
तो ये भी वो पेमेंट्स हैं जो कि करनी होती हैं, और ये तमाम तीनों चीज़ें हमारी फिस्कल पॉलिसी का मेन हिस्सा है, जो कि एफबीआर जिसमें अपना रोल प्ले करता है। टैक्सेस को रेट को कैलकुलेट करना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, और किस से ये टैक्स लिया जाएगा, दिस इज समथिंग विच इज अगेन एज आई मेंशन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सिंपली वो टैक्स है which is related to the income of a person or an organization. More is the income, more will be the tax. An indirect tax is the tax on expenses or expenditure. That is, whenever somebody purchases something, there is a tax which is charged on that. जब हम दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस खरीदते वक्त हमें उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स के लिए जो कॉमन नाम है वो इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर सबसे पॉपुलर सेल्स टैक्स का नाम लिया जाता है। एफबीआर इसके साथ साथ तनाज़ात का फैसला भी करता है टैक्सेस के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन के एपलेट ट्रिब्यूनल भी है कि अगर कहीं पर इदारे ने यानी एफबीआर के अंदर लोगों ने किसी से ज़्यादा टैक्स लिया है, वसूल किया है, और उसके ख्याल में वो टैक्स उतना नहीं बनता, तो वो अपील कर सकता है जहाँ पर ये एपलेट ट्रिब्यूनल मौजूद है, और वो उसकी सुनवाई होती है और उसका फैसला किया जाता है कि क्या उसको टैक्स ठीक चार्ज किया गया है या ज़्यादा चार्ज किया गया है, ताकि उसकी वहाँ पर एडजस्टमेंट की जा सके। सो हम ये कह सकते हैं कि एफबीआर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि वो उस मुल्क को चलाने के लिए वो फंड्स प्रोवाइड करने में मदद देता है जिनके ज़रिए से किसी भी मुल्क और इकॉनमी को चलाया जाता है और उसे सस्टेन किया जाता है।